Hello everyone. In this video, we are going to study the most important part of this chapter. That's basically this set of chemical properties. Okay. तो जो इस वीडियो में है that's going to be very important and there is a reason why it is important. Okay. Because questions काफी बार पूछा जा चुका है. Secondly, direct questions आते हैं. Write short note on oxidation of alcohols. Sometimes they give you indirect questions, but definitely हमेशा किसी ना किसी तरीके से ये क्वेश्चन आता ही है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ओके, so this is chemical properties part number 3. okay, part 1 part 2 तो हमने bond breaking के बारे में किया. ये है अलग set of reactions. okay, so these set of reactions are called as oxidation reactions. okay, तो oxidation of alcohol, this is going to be the discussion in this particular video. okay, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि reagent कौन कौन से use कर सकते हैं. okay, so let's talk about the reagent. The first reagent that you can use over here is basically K2Cr2O7. okay, K2Cr2O7 plus okay dilute H2SO4. ओके, सो आइए देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है. ध्यान से देखिए. सो बेसिकली K will go with SO4 and you will get K2SO4, right? Then you will be getting Cr2SO4 थ्राइस. ओके, तो K गया SO4 के साथ, Cr गया SO4 के साथ. अब बचे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट विल गिव यू वाटर. ओके, and then you will be getting nascent oxygens. okay, अब इसको बैलेंस करते हैं. SO4 is 3, SO4 is 1, so यहाँ पे मैं लिखूंगा 4H2SO4, right? 4H2SO4, then you have Cr2SO4 thrice, so this is fine. K2SO4 is also fine. अब बचे 7 oxygen and 8 hydrogen, right? 8 हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4H2, so this gives 8 हाइड्रोजन. अब बचे 7 oxygens, right? So that means 3 nascent oxygens should be there. Can you please verify whether this is correct? Okay, I hope this is correct. Yes. So this is one reagent. Then you can also use alkaline KMnO4, right? कई cases में acidified KMnO4 भी reactions दिखाते हैं, but as an oxidizing agent. However, it may not work with this particular substrate, right? And then the next one that you are going to study is PCC, जिसे हम कहते हैं pyridinium chlorochromate. Then next set is going to be pyridinium dichromate, right? And then the next one is basically chromium trioxide. okay, इसमें से कुछ reagents आप पढ़ेंगे in section of aldehydes and ketones, especially the PDC part. okay, so let's talk about this reagent now. The entire focus of this oxidation reaction is going to be for K2Cr2O7 and dilute H2SO4. okay, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं reaction से. ठीक है, so now let's start. reagent तो आपको पता चल गया. अब हम देखते हैं reaction क्या है और reaction कौन सा है. Now you already know there are 3 types of alcohol, right? So I'm going to write the first reaction. This is going to be with primary alcohol, right? Primary alcohol. तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ primary alcohol. So this is CH3, right? And then I'm going to write here as CHH, correct? And then I'm going to write here as OH. Now मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा. कैसे करूंगा? By using K2Cr2O7, right? K2Cr2O7 and dilute H2SO4. ठीक है, तो क्या होगा? What is oxidation basically? Oxidation is nothing but removal of hydrogen, right? तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, दोनों जाएंगे ऑक्सीजन के पास और हमें मिलेगा CH3, and I'll be getting C. There is an H over here and obviously there will be a double bond. और ये क्या है? ये है aldehyde, right? अब फिर से ऑक्सीडेशन होगा इसका क्योंकि ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है. तो now what will happen? This hydrogen will be removed और वहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन. So you have CH3, CO, and then there is going to be double bond, right? अब can you see this oxygen is incomplete? तो फिर से आ जाएगा जो हाइड्रोजन निकल गया है वो, correct? So this is again K2Cr2O7 H2SO4, correct? So can you see here there are 2 carbons in this alcohol, there is 2 carbon in this aldehyde, right? And then there is 2 carbon in this acid,
करेक्ट। तो यह है प्राइमरी अल्कोहल जिससे हमें मिला अल्डिहाइड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड देन एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन? प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव एन अल्डिहाइड एंड एसिड both containing same number of carbon atoms. Very simple. Okay, now let's talk about 2-degree alcohol, that is basically the secondary alcohol. अब देखते हैं secondary alcohol क्या देगा। तो मेरे पास है ये 2-degree alcohol. The name of this alcohol is basically isopropyl alcohol, right? So basically मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन यूजिंग the same set of reagent. So oxidation is again, let me tell you, it's removal of hydrogen. ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, दोनों किसके साथ जाएगा? What oxygen? तो I'll get minus H2O here. So what do I get here? So I'll be getting CH3 and then I'll be getting C and there is one CH3 over here and then there is going to be double bond O, right? So ये क्या है? ये है basically ketone, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब आगे ऑक्सीडेशन एक और बार होगा। Now in this case oxidation will happen over here, तो ये इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो C का ऑक्सीडेशन होगा as CO2 and H का ऑक्सीडेशन होगा as H2O. I'm not doing the balancing you have to do it. Okay, तो हमें क्या मिलेगा? CH3 and then you have C double bond O, right? Correct. And then obviously यहाँ पे आ जाएगा एक ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट हो जाएगा एंड देन दिस कम्स वन हाइड्रोजन, राइट? एंड देन बाय प्रोडक्ट क्या होगा? बाय प्रोडक्ट होगा CO2 प्लस H2। सिंपल, CO2 प्लस H2 तो मिल गया, राइट? तो मैं फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये कार्बन केमिस्ट्री, देयर इज वन इनकम्प्लीट वैलेंसी, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए आ जाएगा हाइड्रोजन, राइट? तो इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, देयर आर 3 कार्बन हियर, इजंट इट? ठीक है, सो यहाँ पे है 3 कार्बन वाला अल्कोहल और ये है 3 कार्बन वाला कीटोन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स द सेम। लेकिन इसमें अगर देखा जाएगा तो दिस इज 2 कार्बन एसिड, राइट? सो व्हाट इज द कंक्लूजन? Secondary alcohols on oxidation give a ketone with same number of carbon atoms, whereas on further oxidation it gives an acid with 1 carbon atom less. तो अगर यहाँ पे n कार्बन है, यहाँ पे होगा n कार्बन, राइट? और यहाँ पे होगा n-1 कार्बन, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल का क्या। नाउ इस रिएक्शन में हम यूज करें H2SO4, राइट? आपने देखा होगा कि H2SO4 बहुत ही, मतलब टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन जब हमने पढ़ा, राइट? टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन जब हमने पढ़ा तो बेसिकली हमने एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ा, राइट? वो ये कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिनिमम क्वांटिटी में रहे तो भी इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, राइट? तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन उतना आसान नहीं होता, करेक्ट? तो इनिशियली व्हाट हैपेंस, ये जो H2SO4 है, इवन इफ इट इज इन डाइल्यूट अमाउंट, दिस अंडरगोस डिहाइड्रेशन, राइट? दिस फैसिलिटेट्स डिहाइड्रेशन ऑफ दिस अल्कोहल। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे OH और H टर्शियरी अल्कोहल है, राइट? ये बना देगा वाटर और हमें क्या मिलेगा? वी विल बी गेटिंग CH3 C CH3, राइट? डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट? तो हमें मिला अल्कीन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, राइट? इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पे आपको क्या मिलेगा? सो नाउ ऑक्सीडेशन होगा इस डबल बॉन्ड पे, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा O और यहाँ पे आ जाएगा O, राइट? तो हमें मिलेगा ये CH3, this is connected to C and there is a CH3 and there will be double bond O, right? यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस CO2 क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, राइट? और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्या होगा? एज वाटर, राइट? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा इन टर्म्स ऑफ वाटर, करेक्ट? राइट, तो हमें मिलेगा ये। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन देखिए, इसके फर्दर ऑक्सीडेशन में क्या मिलेगा? कैन यू सी दिस कीटोन हमें मिला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, सेम रिएक्शन, कैन यू सी दिस? सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 कार्बन्स, राइट? तो टर्शियरी अल्कोहल में 4 कार्बन, अल्कीन में है 4 कार्बन, राइट? फिर इसका ऑक्सीडेशन में हमें मिलता है कीटोन विद 3 कार्बन एंड एसिड विद 2 कार्बन। ओके, what does this mean? What does this statement mean? Tertiary alcohols on oxidation give
initially they don't get oxidized, they undergo dehydration to give an alkene containing same number of carbon atom, which undergoes oxidation to get ketone with one carbon atom less, and then acid with still one carbon atom less, right? Correct. अगर ये n कार्बन है तो ये होगा n कार्बन, ये है n-1 कार्बन, ये है n-2 कार्बन. Okay, ये था reaction with alcohol. Okay, so now let's try to summarize. Primary alcohols on oxidation give aldehyde and an acid with same number of carbon atoms. This is the first point. Second one, secondary alcohols on oxidation give a ketone with same number of carbon atom but acid with one carbon atom less. Tertiary alcohols are not susceptible to oxidation. So initially, concentrated H2SO4 dehydrates it to give an alkene containing same number of carbon atom, and then it undergoes oxidation to give ketone with one carbon atom less, and then acid with two carbon atom less than the corresponding alcohol. Okay, alcohol से हम compare कर रहे हैं, right? So this is basically the most important part. Okay, अब हम summarize करते हैं. So can you see this? Primary alcohol हमें देता है aldehyde and acid both containing same number of carbon atom. तो अगर यहाँ पे है n कार्बन, यहाँ पे होगा n कार्बन, यहाँ पे होगा n कार्बन, राइट? अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन एंड कीटोन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n कार्बन, कीटोन विद n कार्बन, राइट, एंड एसिड विद n-1 कार्बन, राइट? अब देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल, लेट इट बी n कार्बन, अल्कीन मिलेगा n कार्बन का, एंड देन कीटोन मिलेगा n-1 कार्बन का, right, and then acid milega n-2 carbon, right? So this is basically the summary for oxidation. Very simple. Okay, so this was about the oxidation. अब हम आगे जाते हैं in the next part. Okay, अब हम पढ़ेंगे selective oxidation. Now alcohol का oxidation पे मुझे डायरेक्टली एसिड मिल रहा है, लेकिन मुझे अगर अल्डिहाइड चाहिए होगा तो मुझे ऑक्सीडेशन को अल्डिहाइड या कीटोन के स्टेज पे रोकना होगा. तो इसीलिए हम यूज करेंगे कुछ सेलेक्टिव रिएजेंट. सेलेक्टिव रिएजेंट्स क्या करते हैं? इसको सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब हमको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वही मिलता है. तो ये है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC, राइट? तो प्राइमरी अल्कोहल आपने थोड़ी देर पहले इसका रिएक्शन पढ़ा, राइट? सो दिस इज CHH and then you have this OH, right? तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, right, using pyridinium chlorochromate. तो obviously what is oxidation? Removal of hydrogen. ये दो हाइड्रोजन चले जाते हैं इस ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलता है वाटर, right? So what is that which you get? CH3CHO, right? CH double bond O. So basically इसके आगे no reaction happens, right? So this is basically the conversion to an aldehyde, right? क्योंकि aldehyde को वो एसिड में कन्वर्ट नहीं करता, that is the reason this reaction stops at this level. Okay, now the next part is about the ketone, right? सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन मिलता है, कीटोन के आगे एसिड भी मिलता है, right? तो हम यूज करेंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. So reaction is going to be the same. So I'm going to write here CH3, CH3, right? तो can you see ये secondary carbon, यहाँ पे मैं लिखूंगा OH, right? और यहाँ पे obviously है H. This is isopropyl alcohol or propan 2-ol. Okay? तो इसमें मैं लिखूंगा oxidation. Oxidation is using CrO3. तो यहाँ पे क्या होगा? H and H निकल जाएगा with O और हमें मिलेगा CH3. ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे होगा CH3 and then there is going to be a double bond O, right? So can you see इसके आगे basically there will be no reaction, right? So this is about the secondary alcohol. Okay. Now oxidation का एक और नाम है, वो नाम है dehydrogenation. Okay. So basically dehydrogenation है क्या? हाइड्रोजन का निकालना. You already know oxidation is addition of oxygen or removal of hydrogen. इसमें हम यूज करेंगे कॉपर, मेटालिक कॉपर in 573 Kelvin. Okay? तो reactions are going to be the same. So मैं सबसे पहले यूज करूंगा CH3, CH, यहाँ पे है एक H और यहाँ पे होगा
OH, राइट। तो इसे मैं यूज करूंगा, ऑक्सीडाइज करूंगा यूजिंग मेटालिक कॉपर एट 573 केल्विन, राइट। ये हाइड्रोजन निकल जाएगा क्योंकि इट इज डिहाइड्रोजनेशन और हमें मिलेगा CH3CH double bond O, right? So this is an aldehyde. Next part, you have CH3 and then you have C. Again there is a CH3, same reaction, right? But इसका सिर्फ नाम अलग है. So this is H, this is OH, right? Again the same conditions over here. क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकला तो हमें मिलेगा कीटोन. So CH3C CH3 double bond O, right? तो हमें मिल गया कीटोन. अब हम देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल के साथ क्या होगा. So tertiary alcohol, this is CH3C, and now you have a CH3 over here. There is one more CH3 जो मैं लिखूंगा कुछ इस तरह से, right? Now can you see temperature बहुत ज्यादा है यहाँ पे, right? Means ये जो अल्कोहल है 573 केल्विन, right? टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन बहुत इजीली हो जाता है, करेक्ट? तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन के बजाय एट 573 केल्विन बेसिकली होता है वाटर एलिमिनेशन, जो है डिहाइड्रेशन. तो H और OH बनकर निकल जाता है एज वाटर और हमें कोई अल्डिहाइड या कीटोन मिलने के बजाय मिलेगा एक अल्कीन, राइट? सो द नेम ऑफ दिस अल्कीन इज ऑब्वियसली आइसोब्यूटीन. ओके, एंड इसके आगे कैन यू सी नो ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल, राइट? सो दिस इज द रीजन. नाउ रिएक्शन अल्डिहाइड के आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि वैसे भी ऑक्सीजन का कोई सोर्स ही नहीं है यहाँ पे, तो रिएक्शन इसके आगे जाएगा ही नहीं, राइट? सो दिस इज बेसिकली इसके आगे I'll write here no reaction happens basically. Okay, the name of this compound is isobutene या isobutylene. Okay, so this was about the dehydrogenation, very simple concept. Okay, अब हम देखते हैं समरी. प्राइमरी अल्कोहल से हमें मिलेगा अल्डिहाइड, राइट? और इसके आगे रिएक्शन इसलिए नहीं जाए क्योंकि ऑक्सीजन का कोई सोर्स है ही नहीं. And then secondary alcohol gives ketone. Tertiary alcohols high temperature की वजह से हमको देते हैं alkene. Okay, so these were set of very important reactions. It's my sincere request, polite request, इस oxidation और dehydrogenation को आप बिल्कुल भी option पे न छोड़ें, right? So this was all about the oxidation and dehydrogenation. Okay, this brings us to the end of this video. I hope this video was useful to you. You can address me the questions which you have during my regular class. Thank you.